गुजरात में शराबबंदी के नियमों की बातें केवल हवा में ही है, क्योंकि आए दिन शराबबंदी के नियम की धज्जियां उड़ती हुई खबरें गुजरात से सामने आती है। वडोदरा में भी अवैध तौर पर शराब की बिक्री होने की कई खबरें मिलती रहती है। तब वडोदरा की सरकारी कचहरी के पिछले हिस्से में इस बार शराब की खाली बोतलें देखने मिल रही है, जो कई सवाल खड़े कर रही है। दरअसल वुडा भवन के पिछले हिस्से में खाली शराब की कई बोतलें दिखाई दी है। ऐसे में क्या वुडा के कर्मचारी या अधिकारी वहां पर पार्टियां करते हैं, ये सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। आखिरकार सरकारी कचहरी में ही शराबबंदी के नियम की धज्जियां कैसे उड़ रही है, ये सवाल भी यहां पर सामने आ रहा है। इस मामले के मद्देनजर विपक्षी नेता अमीबेन रावत और सामाजिक कार्यकर अतुल गामेजी ने वडोदरा महानगर पालिका के पदाधिकारियों पर कई प्रहार करते हुए सवाल खड़े किए हैं और तटस्थ जांच की मांग साझा की है। આમ તો ગુજરાત આખામાં દારૂબંધી છે, તો ગુજરાતમાં આ રીતના સરકારી કચેરીની બહાર બી જો દારૂ પીવાતો હોય તો દારૂબંધીના નામે જે તમાશો થાય છે અને જે રીતના ખુલ્લેઆમ દારૂનો વેપલો થાય છે, જગ જાહેર છે કે અહીંયા તો હવે ફોન કોલ પર ઓન ડિલિવરી ઘરે બી દારૂ પહોંચાડવામાં આવે છે અને એમાં કોઈ પોલીસ બી અજાણ નથી કે શાસન કરતાઓ અજાણ નથી। તો પછી ખાલી દારૂબંધીનો જે દેખાવો છે એ કરીને માત્ર અત્યારે દારૂબંધીના મારફતે એક મોટી આખી કમાણીની રિંગ ઊભી થઈ હોય એ રીતનું ફલિત થાય છે। બુડા ઓફિસની પાછળ જે તમે કહ્યું કે આજે દારૂની બોટલ્સ મળી આવ્યા છે, ચોક્કસ પોલીસ તંત્રે આની તપાસ કરવી જોઈએ અને જે બી આમાં સંડોવાયેલા હોય એના પર તાત્કાલિક પગલાં લેવા જોઈએ। પણ ગુજરાતની પરિસ્થિતિ પર આ એક ખૂબ મોટો પ્રશ્ન ઊભો કરે છે કે દારૂબંધી ખાલી નામ માત્ર છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।